Okay, class. So good morning and welcome to the session. So let's get started. So what were we doing yesterday? We were discussing our basic stats, right? So let's continue. लोगों ने पढ़ाई करी घर में? ठीक है, fair enough. So I'm sharing a screen. I hope people can see the screen. So any doubt, any questions from the last session? कोई doubt है, कोई questions है? सबको समझ में आया? What is this thing? So yesterday, I think while the class was about to end, we were discussing what is our standardization, right? And then normalization. And then we also discussed what is log transformation. So why do we do log transformation? Log transformation किस लिए होता है और क्या होता है? To make non-linear to linear. Okay. So log transformation. Okay, let's move to some other basic stuffs. Then I think this topic you already would be knowing. Some might have discussed, or probably I might have discussed in induction program. Types of analytics. करा हुआ है? कितने types होते हैं? So basically, tell me. Descriptive, then diagnostic, predictive, prescriptive. Prescriptive. ठीक है? So descriptive is basically what has happened, right? And diagnostic is why it happened. And predictive is what will happen. Yes, you can say what will happen. What will happen. So for example, let's say using previous data or using old data or previous data, you want to predict. Prescriptive is you suggest the changes.
प्रेजेंटर कौन है इस टाइम? Siddharth Jain is the host. Siddharth, make me the host. कौन है सिद्धार्थ जैन? वो होस्ट बन गया है। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है सर। Okay, ठीक है, let's continue. So there's some power issue going on, I guess. Descriptive, what has happened? So basically in descriptive, we tried what happens in descriptive. In descriptive, we try to see what has happened. So we have the old data as in the data which was the events which have happened previously. So over here, you may try to draw your graphs and see what has happened, right? So for example, let's say, if I take an example, let's say there is a organization, a company, which sells some products, which sells, let's say, cars, automobile company selling car. So in descriptive analytics, basically in descriptive, what you will try to do, you will try to see how many cars have been sold, how many cars have been sold, or let's say how many cars have been sold in rural area or urban area, how many cars have been sold in northern region or southern or eastern region, right? All those type of things, if you're doing, that is your descriptive. In diagnostic, what will happen? You will try to find out some answers, why it happened. So for example, let's say if a particular car was sold more in urban area, then why was it sold in more in urban area? Was the cost more, or was it designed in some way that the people in urban areas liked, rural areas did not like, or vice versa? So in diagnostic, you will try to find out the reasons. So if the sales was higher in the northern region, then why is the sales was higher in the north region, why less in southern region? All those type of answers you will try to find out. In predictive, what will happen? In predictive, basically, if the same trend continues, how many cars I would be selling in next 1 month or next 2 months or 3 months, those type of things, if you're doing, that is known as your predictive. You're trying to do the forecasting or the prediction. What is prescriptive? In prescriptive, we will suggest the changes. We'll suggest the changes. So for example, if I take an example of prescriptive, let's say the company wants to sell some 10,000 units or 10,000 cars next month. Then what should be his strategy? Which type of cars he should manufacture more, and which area, whether in which cities or which state they should focus more. Those type of changes, if you are suggesting, that will become the part of your prescriptive. Okay? As a data scientist, if a person is doing only these two things, so probably वो data analyst कहलाएगा, if you are not doing prediction. But if person is doing all these three, and if you are doing three, the fourth is automatic. Fourth is quite obvious. ठीक है? If you are doing predictive, अगर predictive नहीं है, then you are analyst kind of thing. But if you are predictive, then word scientist लग जाएगा. ठीक है? So जब तुम कोई नौकरी में जाना तो देखना क्या कर रहा हो. अगर हाँ तो साइंटिस्ट का काम है, अदरवाइज वो एनालिसिस के काम तक पहुंच जाएगा. So I think Kalpesh is not on mute. Go on mute, please. So let's discuss some probability concepts. Probability हमने पढ़ा है कभी लाइफ में? अच्छा चलो बताओ. What is the range of probability?
0 to 1, perfectly right answer. क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? क्यों? अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मत करो. Let me change my question then. If probability is one for a event, what does that means? So if probability of event is 1, it means that event is definitely going to happen. कोई ऐसा event है जो definitely होता है? हाँ? Which one? Mortal. मरना. Okay, so probably हाँ काफी अच्छा example है death. हाँ? ठीक है. Probability is 0. Probability as 0 basically indicates that event will never occur. That event will never occur. So now, since I have a very simple meaning of 1 and 0, the choice is obvious. The answer is obvious that probability has to be between your 0 and 1. So 1 means event will definitely occur. 0 means it will never occur. So for any given event, the chances, probability basically indicates the chances. So it means it has to be within my 0 to 1. 0 to 1. Okay? Now, let's take a simple question. बहुत ही simple question. If a coin is tossed 6 times, what is probability of getting 4 heads? What is probability of getting 4 heads? Tell me the answer in fraction, not in decimal. थोड़ा सोच तो लेते. Question देखो. If coin is tossed 6 times, what is the probability of getting 4 heads? Or let me say exactly 4 heads. अब तुम सबके माइंड में आ रहा होगा यार ऐसे क्वेश्चन करे तो हैं पर आज नहीं हो रहा है. आ रहा है? तुम्हारे ईगो को टेस्ट किया उसने? क्या? अगर ईगो को टेस्ट किया तो आंसर निकालो विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ गूगल. Think, try and give me the answer without taking help of Google. Google with help लोगे तो आंसर मिल ही जाएगा. No problem with that. How much? एक नंबर आया मेरे पास, क्या था आंसर? 1/30. Okay, so whatever answers I'll get, I'll keep on writing over here because even I don't know what is the right answer. We will calculate it. So he is saying 1/30, but I am not saying whether this answer is right or wrong. It can be right, it can be wrong. But देख के लगता है कि wrong है. But फिर भी जो भी आंसर्स आते जाए प्लीज रखते जाओ. I'll keep on putting it on the. So Vedant is saying 4/6. So another answer I'm getting is 4/6. Someone is saying 1/6. Okay.
1/16. Okay. I'm not saying whether it's right or wrong. जो भी answers आएगा हम यहाँ पे लिख लेंगे. फोर बाय 12 को 1/3 क्यों नहीं बोला तुमने? How much? 4/30. Okay. One by 16. 4/30 किसने बोला? उसने 2/15 क्यों नहीं बोला? 1/16. ओके, ठीक है. और बस कोशिश करो. आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव अ ट्राई, कम अप विद सम नंबर. कुछ तो माइंड में आएगा ही. Yes. 15/64. Okay. Okay. Any other answer? I'll wait for 2 more minutes.
ओके, सो आई डोंट नो हाउ पीपल आर फाइंडिंग द आंसर, बट क्या लगता है सारे आंसर सही होंगे? आंसर तो कोई एक ही सही होगा, या हो सकता है कोई भी सही ना हो. सो इट मींस मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन द रॉन्ग आंसर. ठीक है, ऑल द आंसर्स आर डिफरेंट, सो आइदर वन और नन. हाँ, 1/1/8. Okay, so chances of more wrong answers have increased. जितने आंसर्स देते जाओगे रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी. और कोई आंसर? क्योंकि सही तो कोई एक ही होगा. तुम बताओ लास्ट वन. 24/36. इसको सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं. 6/9. सो ये हो जाएगा 2/3. सो इसने बेसिकली बोला 2/3. ओके, 6 4 6 6 2/3. Any other answer? Last person. What does this means? कुछ तो मन में आया होगा. 0 1 के बीच का कोई नंबर. कोशिश की थी या खाली बैठे हुए थे? कोशिश की थी तो बताओ कोशिश का रिजल्ट क्या आया. अरे बताओ, वी आर वेटिंग. अभी मुझे उसका आंसर सुन रहे. 1/16. ओके, जो मन में आया उसने बोल दिया. चलो इसके लिए दो ऑप्शंस आ गए. हाँ, कोई और बोल रहा था. सम अदर नंबर, यू आर सेइंग समथिंग राइट? येलो टी शर्ट बताओ. क्या नहीं? अरे कुछ तो मन में आया होगा. हाँ, तो फाइनली क्या आया माइंड में? 5/13. ओके, एक न्यू आंसर आता हुआ दिख रहा है. तुमने कुछ बोला था? 7/32. ओके, और कोई है जो बोलना चाहेगा? नहीं? चलो अच्छा ठीक है. ये सारे आंसर सबको पता है ना किसने क्या आंसर बोला है? मैंने नाम नहीं लिखे. लेट्स सी किसका आंसर सही है, या हो सकता है सबके आंसर सही. सो एक और आंसर आ रहा है 15/64 फ्रॉम सिद्धार्थ जैन. 15/64. 15/64 ऑलरेडी शायद किसी ने बोला था, इसके लिए 2 दे देता हूँ. 2 people have recommended this one. ठीक है, चलो. बट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला या वन एंड ओनली वन फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू अकर is equal to total number of favorable outcomes. Total number of favorable outcomes divided by total outcomes. Total outcomes कितने हैं और उसमें से हमारे favorable कितने हैं? तो let's try answering this. So if you find the value of numerator and denominator, answer is that. So total outcomes कितने होंगे? 64. किसी को डाउट है? बट ऐसा लग रहा है कि लोगों को 64 नहीं आया, बिकॉज 2 लोगों ने 64 का बेस लिया है. हो सकता है बाकी ने सिंप्लीफाई कर दिया हो. ठीक है, सो टोटल आउटकम्स बिफोर आई से 2 power 64, इसको ऐसे समझो. लेट्स से यू इफ यू टॉस द कॉइन फॉर 2 times,
सो अगर तुमने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो यू कैन गेट हेड टेल हेड टेल. सो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड एंड हेड टेल. सो इट इज 2 into 2. अब किसी को लग रहा होगा 2 + 2 भी तो 4 होता है, तो जिसको ये लगा बिल्कुल गलत लगा है. उसके लिए लेट्स टेक अ स्मॉल example. Let's say you toss it for 3 times. So every time you toss, you can get 2 outcomes. Now, how many outcomes are possible? Let's say I start with H, H, H. Then H, H, T would be another. H, T, H would be another. T, H, H would be another. And same thing will happen if I take T, T, T. So T, T, H, T, H, T, and T, T. कितने आउटकम हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो जिसके मन में था कि 2 + 2 + 2 करना है तो 6 ही आता. So this would have been wrong. So answer is 2 into 2 into 2, which is 8. So when you are tossing it for 6 times, total number of outcomes would be 2 into 2 into 2 into 2 into 4, 5, and 6. So 2 power 6 is 64. Let's go back to the above formula. We have this part of the answer. इसका आंसर आ गया 64. ठीक है? Any doubt, any question? यहाँ तक ठीक है? So total outcomes आ गए. अब बचता है favorable outcomes. So there were 2 people जिन्होंने 64 को लेके बोला है. So how did you find the favorable outcomes? Hmm. Yes, so if you are tossing it for 4 times, total number of favorable outcomes, उसका standard formula है C6C4. याद आ रहा है? NCR. NCR का formula क्या होता है? Factorial N upon factorial R into factorial N minus R. So put this formula. It would be factorial 6 upon factorial 4 into 6 minus 4. That is your factorial 2. Factorial 6 कितना होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon factorial 4. So the factorial 4 इससे कट जाएगा. Factorial 2 is nothing but 2 into 1, or you can ignore 1. So 3. So 15 by 64. अब देखें किसका आया. So ये 2 लोगों का आंसर सही है. So I think you are one of them. And एक और पर्सन था जिसने ऑनलाइन में आंसर दिया था, सिद्धार्थ जैन. So Siddharth, your name? Vaishnavi. So Siddharth and Vaishnavi have given the right answer. 2 लोगों का आंसर सही. ठीक है? 15 by 64. So good, Vaishnavi and Siddharth. बाकी लोग प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, बिकॉज एक फॉलो अप क्वेश्चन आने वाला है. एंड जब क्वेश्चन देंगे तो कोशिश करनी है, ठीक है? खाली नहीं बैठना है.
Done, guys? Read it and try and give me the answer. How much? 119 upon 119 upon 120. Okay. So this is one answer I'm getting. Okay. What are the other answers? 21 by 128. Okay. Guys, please feel free to give the answers. है ना? ये मत सोचो wrong या right. At least कोशिश करो. सही गलत तो बात की चीज है. पहले कोशिश. इस बार 128 तो ठीक लग रहा है. 2 to the power 7, right? 21 by 128. Okay, so I'm getting 2 people supporting this idea. One answer is coming from online. Dhruv is saying 21 by 128. So 3 people supporting this idea.
बाकी मेरे फ्यूचर के डेटा साइंटिस्टों आंसर क्या है? 28/120. Okay, so 4 people plus 1. 4 people supporting this idea. One 20 upon 128. Okay. Change कर देते हैं as you say, sir. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 120/128. हम्म 15/16. ओके तुम्हारा क्या आंसर? 21/128. 5 लोगों ने इसी आइडिया को सपोर्ट किया है. So Vedant and Swami are also saying 121/128. So plus 2, 5, 6, 7. So 7 people are supporting this. Same. One more person going for this. Second row. ये तुम बीरबल की खिचड़ी बना रहे हो? इतना टाइम लग रहा है. कैलकुलेटर यूज करते हो तुम? हाँ, कैलकुलेटर बैन है. बहुत रेयर सिनेरियो. दिमाग यूज करो. 21/128. Okay. Plus 1. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 people. 21/128. Okay. 10 के 10 लोगों ने इसी को सपोर्ट कर दिया. 21/128. Okay. चलो ठीक है. So let's do one thing. So what would be the probability? Probability again, let me say favorable outcomes upon total outcomes. ठीक है? Favorable outcomes upon total outcomes. So can I say this time total outcome is already clear? It is 2/7. That is 128. ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो निकल आया. लेट्स फाइंड द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाया? So 7C1 plus 7C2 plus 7C3 plus 7C4 plus 7C5 divided by 128. So 7C1 तो 7 ही हो गया. 7C2 कितना हो जाएगा? So 2, 6, 21. ठीक है ना? 7C4 कितना हो जाएगा? 35. 7C3 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3. तो 4 कट जाएगा. 7 इंटू 5 इंटू तो 35. अगर 7C3 35 है तो 7C4 भी 35 होगा प्लस 7C5. तो ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 128. तुम लोग जो आंसर निकाल रहे वो तो मैच नहीं कर रहा. गाइस बताओ ये सही है गलत है? चलो 7C0 डाल दो.
लेकिन तभी भी 121 by 128 तो नहीं आएगा ना। कितना आएगा? 7C0 डाल दो। 7C0 कितना होगा? 7C0 वुड बी 1। ठीक है, 7C0 इज 1। आंसर निकाल के दिखाओ प्लीज। किस किसने ये वाला फॉर्मूला लगाया? तो क्या आया था आंसर? न्यूमरेटर क्या आया था? न्यूमरेटर कितना आया था? 120। हाँ, तो तुम्हारा ही आंसर सही है, 120/128। इसको सिंप्लीफाई करा तो 15/16। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तुम लोग ने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, इस बार मैंने क्वेश्चन पलट दिया था। एट मोस्ट 5 हेड, इट मींस ज्यादा से ज्यादा 5 हेड्स, which means you can have 1 head also, 2 head also, 3 head also, 4 head also, 5 heads also, and 0 heads also. And that is why 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, and you can also say 7C0. So these are your favorable outcomes. And total number of outcomes will still remain the same. So 7C1 is 7, 7C2 is 21, 7C3 is 35, and 7C4 is also 35. 7C5 and 7C2 की वैल्यू सेम होगी, तो 21 and 21, and this है। क्या समझ में नहीं आया? 7C1 7C2 समझ में आया? प्लीज समझाओ इसे, कोई जन देखें कोई से समझा पाता है। तुम्हारे दोस्त को समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला क्यों लगा है, प्लीज एक्सप्लेन करो। एनीवे मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, बट देखते हैं कोई और तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था। थोड़ा जोर से एक्सप्लेन करो ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्या एक्सप्लेन कर रहा हो। अब उससे पूछो तो सही, समझ में आया कि नहीं? क्या चीज क्या 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 कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे हो? एक काम करो, इधर आओ, जाके उधर को समझो। ये लो, तुम्हारे लिए ओपन करके दे दो। नहीं, सिर्फ उसको जो समझ में नहीं आ रहा देखे। आई थिंक उसे एनसीआर का फॉर्मूला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ एनसीआर का फॉर्मूला उसे एक्सप्लेन करो।
2 factorial रहेगा 2 factorial ये लो रब करना तो ये लो और कलर कोड चेंज करना तो ये भी है समझ में आया ओके ठीक है थैंक यू गाइस कैन वी हैव अ क्लैप फॉर इनपुट ठीक है थैंक यू एंड बट मेरे को एक चीज ये लग रहा है कि तुमने अच्छा ही हुआ डाउट पूछ लिया अपना लेट मी टेक इट इन अ लिटिल मोर सिंपलर वे शायद मुझे लगा कि लोग समझेंगे बट देयर आर फ्यू जिनको शायद नहीं समझा होगा जल्दी लेट मी टेक 2 स्टेप्स बैक देखो वैसे ये थोड़ा पता रहे तो अच्छी बात है इतनी बेसिक चीज बट फिर भी एक बार देखो तो when we say NCR what does that means when we say NCR so N is your total numbers and R is your favorable one suppose if I am tossing the coin for 7 times तुम ध्यान से सुनो if I am tossing the coin for 7 times and I am saying how many times I can get heads 5 heads ठीक है so what is the combination so combinations would be something like this 7 times तुम circle create करो 3 3 6 6 7 इसमें 5 हेड आने हैं आई एम सेइंग 5 हेड्स दिस टाइम एग्जैक्टली 5 हेड्स तो 5 हेड्स हमारे कैसे आ सकते हैं आई कैन गेट हेड समथिंग लाइक दिस 5 हो गया एंड देन 2 टेल्स नाउ दीज 5 हेड्स कैन बी एनीवेयर सो इट कैन बी H H H H T H T 5 heads हैं right now there can be many combinations H H H T H H and then again T again 5 heads or H H H T T H H कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे देयर कैन बी स्टिल मोर कॉम्बिनेशंस जब टेल यहां पे आएगा राइट सो हाउ मेनी फेवरेबल हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल ऑफ 5 हेड्स व्हेन यू हैव टॉस द कॉइन 7 टाइम तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एनसीआर एनसीआर मींस फैक्टोरियल एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर यू हैव टू रिमेंबर दिस बेसिक फॉर्मूला ठीक है सो इन दिस केस वैल्यू ऑफ एन इज 7 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 5 so it means factorial 7 upon factorial 5 into 7 minus 5 is nothing but 2 now what is factorial 7 factorial 7 is 7 into 6 into this तो हम इसको लिख सकते हैं 7 into 6 into factorial 5 yes or no yes तो ये factorial 5 कट जाएगा factorial 2 is nothing but 2 आंसर कितना आया 21 और कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें बचपन से याद है मुझे एटलीस्ट याद है कि NCR is equal to NC n minus R so it means 7C2 is equal to 7C5 तो जो 2 की वैल्यू होगी वही 5 की वैल्यू होगी ठीक है या फिर 7C3 is equal to 7C4 ठीक है ना now what was the question was at most 5
हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5, ठीक है, मैक्सिमम 5. इट मींस आइदर यू कैन गेट 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 head, 4 head, 5 head. But if you get 6 head, that is wrong. If you get 7 head, that is wrong. So what would be the favorable number of outcomes for 0 head? 0 head का favorable outcome क्या होगा? अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तभी भी दिमाग बोल देगा when you have all the tails. All the tails कब आएंगे? Only in one condition. सारे tails एक ही condition में आएंगे ना. So इसका आंसर हो जाएगा 1. 1 head 7C6, 2 head 7C2, 3 head 7C3, 4 head 7C4, 5 head 7C5. So favorable number of outcomes क्या हो जाएंगे if you add all of them, which means you add 1 plus 7C6 plus 7C2 plus 7C3 plus 7C4 plus 7C5. Total number of outcomes is anyway 2 to the power 7 only. So इन सबको हमने जब ऐड किया, what was the number? It was 120. So 120 upon 128, that was the final answer. आया समझ में? ठीक है. If condition is at least, तो okay, so एक क्वेश्चन आ रहा है, if condition is at least, चलो, if condition is at least, बड़ा सिंपल है, condition is at least and again at least 5 heads when coin is tossed 7 times. Please निकालो सब लोग. Invest some time and then let's discuss. Condition is at least 5 head when coin is tossed 7 times. कम से कम 5. बस उसका ठीक उल्टा कर दो. $29 by 120, 128. नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, राइट? 29 by 120. दिखने में तो आंसर ठीक लग रहा है, सुनने में. At least 5 heads when coin is tossed 7 times. How much? 5, 6, 7. And see, I am not saying that if you don't know these calculations, you won't be able to create a data science model. But if you don't know these basic things, then some issues would be coming, because since you guys are applying at a fresher level, many companies may
there would be a CBT, computer-based test, where you can expect these type of questions being asked. Asked as in computer-based test. So before an interview, there may be a kind of small exam where these questions. (29 by 128). Okay. Okay, so let's quickly take it up. So I think this time people are much confident. So total number of outcomes will still remain the same, 2 to the power 7. Now what would be the favorable outcomes? I am saying at least 5 head. It means it can be 5 also, 6 also, and 7. At least means come se come, right? So 7C5, 7C6, and 7C7. So 7C5 is how much? 21. 7C6 would be 7, and 7C7 is 1. So yes, so 28 and 29. So all those who calculated this much was that, I think Vaishnavi was the first one. So good. अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये हेड एंड टेल में कंफर्ट आ गया है, तो अब टाइम आ गया है इसे चेंज कर दिया जाए, है ना? जैसे ही तुम कंफर्ट में आओगे मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, ठीक है, ताकि तुम हमेशा भागते दौड़ते रहो, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ो प्लीज एक दिन, रीड इट. Yes, thank you for reading. So how many 4-digit numbers can be created from these given digits? 2, 4, 6, 8, 9, and 7. And there are 2 parts to the question: with repetition and without repetition. With and without. ये इस बार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर 0 और 1 के बीच में मत निकालना, ठीक है? चलो ट्राई करो. तुम नंबर्स को लेके स्माइल कर दो, हाँ? ऐसे कुछ खा सके उसमें.
आंसर इज नो। कैलकुलेटर से नंबर मल्टीप्लाई कर दे सकता है। क्या है आंसर? So I will write or keep on writing whatever answers I am getting. With repetition 8 and without repetition 4. Okay. So I'm not saying whether it's right or wrong. I'm just writing whatever answers I'm getting. So someone has written us some answer. 360. Amol says 360 without repeat. 360 without repeat. Okay. बड़ा डिफरेंस है, तुम 4 बोलते हो, वो 360 बोलता है। कथी लॉजिक है? With or without? 1296. Okay. Without repetition, how much? Correct. जब एक डेटा साइंस का मॉडल तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इफ यू यूज दिस, व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ आउटकम्स, कैसे करोगे? ट्राई करो गाइस।
क्या है फाइनल आंसर? So इस बार लोग घबरा गए, कुछ आंसर्स नहीं आ रहे. So with repetition, so Siddharth, one second. With repetition, he is saying 26244. With repetition, 26244, and without he is saying 360. Without he is saying 360. Okay. So let's anyone, any other answers? Without this 360. Okay. Without repetition 120. Okay. 343. Okay, let's see. So I want to form a 4-digit number. 4-digit number ऐसा होगा, right? So let's say with repetition. So how many different numbers we have? We have 6 different numbers. So at this position, any 6 numbers can come. Over here also any 6 numbers can come. Over here also any 6. Over here also any 6 numbers can come. So with repetition, answer would be 6 power 4. So 36 square. 36 square किसी ने निकाला था? 618, 216, 6, 18, 9, 10, 6, 9, 2, 1296. So जिसने 1296 बोला था उसका आंसर सही है. किसने बोला था? Yes, so your answer is right. 1296. समझ में आया? 6 power 4. See, I am saying, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, for that person I am taking an example. I want to form a 4-digit numbers, but that 4-digit numbers should be formed only with the digit 2, 4, 6, 8, 9, 7. So you can, with repetition, this can be a one number. 4, 4, 4 can also be a number. 6, 6, 6 can also be a number. 8, 8, 8 can also be one number. 9, 9, 9 can also be a number. 7, 7, 7 can also be a number. And then you can have the combinations also. Okay.
Now without repetition. Without repetition, how many total numbers we have? So any 6 numbers can come over here. But the number which has come at this position, position A, cannot come over here. And the number which has come at A and B cannot come over here. 6, 5, 4, 3. So this is 30, 30 into 12. This is 360. I think कुछ लोगों ने 360 बोला था. किसने बोला था 360? You and you. तो भाई तो बोला है. हाँ तो हाँ. Correct. So that's why I am saying, देखो, let's say you have 4 numbers. Let's say you have 3 numbers, 7, 6, and let's say 2. How many 2-digit numbers can be formed? ये तो simple है, हम लोग कर सकते हैं. How many 2-digit numbers can be formed? Let's say this time without repetition. So according to me, the answer would be 3 into 2. That is your 6. And what can be those numbers? Can we quickly have the answer? So those numbers can be 76, 67, ठीक है, 26, 62, और कोई combination? 72, 27, और कोई combination बताओ. Possible है? सोचो. Possible है क्या? नहीं. कैसे निकाला? At this position. So at this position, any 3 numbers can come. But जो number यहाँ पे आ गया होगा, वो अब यहाँ पे नहीं आएगा, तो you have only 2 options left. So 3 into 2. Are you getting my point? ठीक है. तुम जो चीज बता रहे हो उसके हिसाब से आंसर करो. देखो क्या आंसर ज्यादा हो जाएगा. तुमने शायद उसको बाद में 2 से वापस मल्टीप्लाई करा या कुछ और करा. तुम कैसा कहना चाह रहे हो? नहीं देखो, फिर से समझो. सपोज लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. लेट्स से देयर आर 3 नंबर्स 7, 6 and 2. I want to make 2-digit numbers without repetition. ठीक है. थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला भूल जाते हैं. So from 7, 6, 2, how many 2-digit number can be formed without repetition? It can be 76, 67, 72, 27, 62 and 26. इसके अलावा और कोई फॉर्म हो सकता है? Answer is no. ठीक है. So it means I am getting answer as 6. Answer 6 कैसे आएगा? There are 2 places. Let's say at this place, out of these 3 numbers, any 3 numbers can come. But जो number पहले आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता. So you have only 2 options. So 3 into 2. Simple तो है.
ओके। अच्छा, डू यू रियलाइज ऐसे क्वेश्चन तुम लोग ने कभी ना कभी करे जरूर होंगे, बट समय के साथ भूल गए। मुझे ऐसा लगा था जो मैकेनिकल वाले हैं वो अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, बता देंगे आंसर, बट शायद वैसा नहीं हुआ। ओके चलो, लेट्स प्रैक्टिस फ्यू मोर, एंड anyway probability is kind of endless, so I cannot cover almost every scenario, but I want to build your thought process. What is probability of picking two green balls with replacement without replacement? बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, डायग्राम तुम्हारे सामने, and obviously when you are picking the ball you cannot see the ball, अंधेरा है कमरे में, ठीक, ये आंखों पे पट्टी बंदी है या दिमाग पे पट्टी बंदी है? खूब जी भर के कैलकुलेटर यूज करो, देखो आंसर आता है। रिप्लेसमेंट मीन्स जो बॉल तुमने डाली वो, द बॉल यू पिक यू हैव पुट इट बैक अगेन बिफोर पिकिंग द सेकंड बॉल। तुमने एक बॉल उठाई, उसका कलर देखा या नहीं देखा और वापस रख दिया बिफोर पिकिंग द सेकंड बॉल। So with replacement means you pick a ball and before picking a second ball, you put it back in the bag. So in with replacement, total number of balls will always remain the same. Are you getting my point? So I'm getting one answer on chat. Let me see what's that answer. So Amol, this time, this is a question of probability. So answer has to be within your 0 and 1. How can answer be more than 1? So please recheck your answer and recheck your basics. इस बार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दिखता है व्हाट इज अ पीआरओबी?
अभी तो सिंपल प्रोबेबिलिटी पूछा है, अभी तो कंडीशनल तो डाला ही। कोशिश करो, तो मुझे मत देखो। अच्छा पता है ये क्वेश्चन ना क्लास 9 का बच्चा कर देगा। तुम जाके पूछ लो, अगर तुम्हारा कोई कजन वजन है जो क्लास 9 में, वो फटाक से कर देगा और हंसेगा अलग से तुम पे। And see, basically, I can say that even if you're not able to solve this question, you can still build your data science algorithm. But then there are many algorithms which are totally based upon probability. तो वहां पे तुम्हें you will face some challenge. For example, naive Bayes, it is totally based on conditional probability. ठीक है, so basically it's a wake up call. घर जाओ, थोड़ा सा probability पढ़ना start. Form a study group among yourself, put some questions, discuss them. Arey, can I have at least one answer, please? Amol, is the doubt clear to you? The answer cannot be 42. It has to be between 0 and 1. Or whether you are saying 0.42, then I'm not sure. I cannot see that decimal number. So Siddharth is giving one answer, 49 by 100. Okay. So I'm not saying, and Siddharth, this is for with or without? With, okay. So finally, answers have started to pour in. It is with 49 by 100. So one answer I'm getting is 49 by 100. Okay. I know whether this slide is long. 3, 6, 7, 8, 9, 10 हो भी सकता है सही। एक्चुअली ये आंसर दिखने में ठीक लग रहा है। ट्राई करो, टेक 2 more minutes and then let's discuss. For with or without? 7 upon
And for width? Okay, guys, so let's quickly discuss. Tell me. For width 28 by 90. For width, it is 28 by 90. And without? Without 45 by 90 for width. With replacement 45 by 90 तो half हो गया. 1 by. इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स कहां से लाते हो तुम लोग? ठीक है, चलो एनीवे. Okay, see guys, how many total balls we have? We have 10. Total 10 है. Total is 10. Out of these 10, 7 are green and 3 are red. I have to pick 2 green ball. So when you are trying to pick the first green ball, then what would be the probability of picking the first green ball? Can I say it would be 7 by 10? Yes. पहली बॉल अगर निकालनी होगी ग्रीन तो 7 by 10 होगा. Total balls are 10 and out of them 7 are green. Now with replacement. With replacement means let's say you have picked this ball. तुमने इसको बाहर निकाला and then again you put it back. So next time when you are trying to pick the second ball, how many balls would be there? Again, there would be 10 balls and there would be 7 green balls. So answer is 49 by 100. So जिसने 49 by 100 दिया था उसका आंसर सही है. I think that person was Siddharth. तो सिद्धार्थ का आंसर सही जाता हुआ दिख रहा है, सिद्धार्थ जैन. Any doubt, any question? समझ में आया तुमको? क्लियर आया? तुम्हारे बाजू में जो है उसको क्लियर है? With replacement means the ball you picked, you are putting it back again before pulling the second ball. अब without replacement देख लेते हैं. Very simple. Let me say without replacement. In without replacement, when you are about to pick the first ball, it would be answer would be 7 by 10. But next time it would be तुमने एक green ball निकाल लिया तो वो कम हो गया. But now total number of balls are 6. Total green balls are 6 and total number of balls are 9. तो ये हो गया 7 by 15. किसने 7 by 15 बोला था? Yes, so your this one is right. तो तुमने जब ये वाला कर लिया तो ऊपर वाला क्यों नहीं किया? मुश्किल वाला कर लिया था. ठीक है, तो 7 by 15 is right answer. Okay, let me create some more examples for you.
Coin is tossed 400 times. Guys, please focus. Coin, I'll not say coin is, but let's say coin was tossed 400 times. And there were 390 heads and 10 tails. Coin is about to be tossed 5 times more. What is the probability of getting 2 hits? क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को करो. एक हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन सिंपल है. Coin is about to be tossed 5 times more. What is probability of getting 2 hits? 10 by 32. 5 by 16. कैसे निकाला? सुनने में आंसर ठीक लग रहा है. Yes, so perfectly right. So actually इसने बहुत ही सही आंसर दिया. Your name Vaishnavi. Okay, see guys. So this part of the information is basically to confuse you. ठीक है, confuse करने के लिए. क्यों confuse करने के लिए थी? Actually confuse करने के लिए नहीं थी. It was to build a larger concept. It was to build a larger concept. So Vaishnavi, tell me, why did you ignore this information? क्यों ignore कर दिया? It has to be ignored, but why? So your answer तो ठीक है, but उसका explanation शायद ठीक नहीं है. Thought process building. हाँ, please. It means thought process building. See, guys, basically. That happened and this is about to happen. So अगर मैं यहाँ से ये about word हटा देता तो क्या आंसर कुछ अलग हो जाता?
See, basically, this part has to be ignored, and I'll tell you why. Because theory of large numbers करता है. ठीक है? Which means, see, forget about this above question. Let's say you toss a coin. So what can you get? You can get either head or tail. Let's say you toss it for the first time. तुमने first time toss किया, तुम्हें head आया. Second time head आया, third time head आया, fourth time head आया, fifth time head आया, sixth time head आया. So what do you mean? Seventh time again head ही आएगा? Answer is no. Seventh time. So you are about to toss it for the seventh time. Again, head and tail can come. Probability of head and tail are same, 0.5 and 0.5. Because coin is unbiased. ये शोले वाला coin तो है नहीं. Coin is unbiased. So every time you are tossing, probability will remain the same. So let's say you toss for 100 times. And every time you get an head. So basically this is just a coincidence. इसका मतलब ये नहीं कि when you are tossing for 101st time, probabilities will change. But probabilities will change when you have tossed it for how many times? When you have tossed it for infinite number of times. जब तुमने infinite numbers of time toss कर लिया and every time you are getting head or most of the time you are getting head, then you can say this coin is a biased coin. इसमें head and tail की probability same नहीं है. But over here, you have tossed only 400 times. So incidentally, out of 400 times, 390 times head आया. That is just a coincidence. So when you are tossing it for the 401st time, probability of head would be 0.5 and probability of tail would also be 0.5. So basically, इस information को ignore कर दो and just solve it in the way which we have already learned. So 5 time toss कर रहे हो और 2 head आने. So total number of favorable outcome 2 power 5 and 2 heads के लिए 5C2. So 5C2 is how much? 5C2 is 10 और नीचे आ जाएगा 32. तो कितना हो जाएगा 5/60. ठीक है. So theory of large numbers. ठीक है. So till the time you have tossed it for infinite number of times, you cannot say that coin is a biased coin or probabilities are different. ठीक है. So you did ignore the first information, but the logic for ignoring was not proper. हेड एंड टेल चाहे कुछ भी हो. अगर मैं यहाँ पे लिख देता कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तभी भी आंसर सेम रहता. जितनी 2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी. जितनी 2 हेड की होगी उतनी 3 टेल की होगी. जितनी 3 टेल की होगी उतनी 2 हेड की होगी. सिमेट्री. घर पे जाके सारे क्वेश्चंस को एक बार वापस देखो ठंडे दिमाग से, and then probably idea will start sinking in. So learning probability in 2-3 hours probably it will take some toll on your mind.
Okay, let me say. Let me say rainfall in some city, Mumbai city. मुंबई में खूब बारिश होती है, बारिश का सीजन भी आ रहा है, ठीक है. So for example, let's say you have some historical data. You have data. Any problem? The screen is not shared. Yeah. Okay. अभी दिख रहा है? Okay. So let's say you have a data from year 2000. ठीक है. Or let me say not 2000, but let me say 2010. Last 10 साल का data. And so let's say Mumbai city rainfall was 200 centimeter in 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 अभी आने वाला, राइट? बारिश का सीजन चालू नहीं हुआ. Okay, so basically you have the data for last 11 to 12 years. Now the question is, so the rainy season is yet to set. So I don't know what would be over here. So this is a question mark. What is the probability that city, that is your Mumbai city, receives exactly 200 centimeter rain? Please try karo. Six by, so let me write down all the answers. 6 by 11 and किसी और ने कुछ बोला 0.5. 0.5, okay. Any other answers?
कितना 5/2 5/12 11/30 11/20 20 कहां से आया ये? मतलब 11 तो मुझे फिर भी समझ में आ रहा है, 20 कहां से आ रहा है? 11/12 20/11 कैसे हो सकता है? वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी नहीं होती। कुछ तो सोचो। अच्छा, एक हिंट देता हूँ। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुम्हें लग रहा होगा ये कैसा हिंट दिया है, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा हिंट है। नहीं, 2022 को अभी कंसिडर नहीं करना है, अभी तो बारिश चालू होने वाली ना, तो तुम्हें बताना है कि 22 में कितनी बारिश होगी। और जरा एक वर्ड को एक और हिंट देता हूँ इस पर, और भी अच्छा हिंट। जरा इस वाले वर्ड को ध्यान दो। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले ही से रेड मार्क कर रखा था। एक और हिंट देता हूं, अब तक सारे आंसर गलत। तो जो लोग आंसर दे के बैठे हैं वो फिर से सोचें। So 3 hint, simple question, exactly until this point all the answers are wrong. Okay, let me take this up. I think people are struggling. छोड़ दो, वो भी गलत है। इसका आंसर है 0 and this is the right answer. अब सोचो कैसे, हाउ, सोचो क्यों। थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने सही आंसर दिया, सोचो क्यों। आउटकम इज 0, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अभी नहीं नहीं, उससे थोड़ा ना मतलब। See, guys, trust me, answer is 0. Okay, try understanding it why it is 0. And this is actually a concept which should fit in your mind कि ये probabilities कहाँ पे 0 आ जाएंगी। Remember, starting of the class मैंने पूछा था what does 0 means? 0 means that event can never occur. So if I am saying 0, it means exactly 200 वाला event can never occur. And see how. What is the probability? Formula of probability क्या होता है? Favorable outcomes divided by total outcomes. So last question में you guys ignored that coin is tossed 400 times. But इस बार तुम लोग ने इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर क्यों नहीं किया? ठीक है, अब देखो टोटल आउटकम्स क्या होंगे एंड मार्क माय वर्ड एग्जैक्टली। सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर हाइट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 5 feet 4 inches 5 inches।
Let's say your height is 5 feet 6 inches. But if I change my question, is your height exactly 5 feet 6 inches? क्या एक भी माइक्रोन ज्यादा नहीं है कम नहीं? Can you guarantee that? What is your weight? So you may say, let's say my weight is 60 kg. But is it exactly 60? क्या तुम गारंटी दे सकते हो एक भी ग्राम ज्यादा नहीं होगा या एक भी मिलीग्राम ज्यादा नहीं होगा? So when you say something exactly, do you notice उसकी probability almost 0 हो जाती है? कोई भी चीज ऐसी उठा के देखो, सोचो. So when I say, so what is the total outcomes? Total outcomes are infinite. It can range 200 centimeter also. It can range 200.001 centimeter also. It can range 200.1 also, 200.2 also, or whatever. Okay. So total number of outcomes would be infinite, but favorable outcome is exactly 200. So 1 by infinity is nothing but 0. एक चीज ध्यान रखना, don't get confused between your head and tail. Head and tail में outcomes were not infinite, because when you are tossing for head and tail, the answer was your in categories. Categories समझते हो? Categories. But rainfall is a numeric and continuous data. Numeric and continuous data. It can take any value. Suppose if I ask you that you went for jogging, so you will say, okay, I jogged for 5 kilometers. But did you exactly jog for 5 kilometers? एक भी सेंटीमीटर कम या ज्यादा नहीं. So as soon as I say exactly, the answer will become 0. ठीक है? So over here, I am saying it is raining 200 centimeter or whatever. But in question, I am asking exactly 200 centimeter. So can you guarantee कि एक भी बूंद ज्यादा नहीं पड़ी होगी या एक भी बूंद कम नहीं पड़ी होगी? खुद सोचो. तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं. एंड इफ यू वांट टू से कि नहीं मेरे को फॉर्मूले से बताओ, तो फॉर्मूले से बताना है फेवरेबल आउटकम वुड बी ओनली 1 बिकॉज यू आर सेइंग एग्जैक्टली, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट क्यों होंगे? बिकॉज इट कैन टेक एनी वैल्यू. इट कैन बी 190 ऑल्सो, इट कैन बी 190.001 ऑल्सो, 190.002 ऑल्सो, एनीथिंग. ठीक है? बिकॉज दिस टाइम द डेटा इज न्यूमेरिक एंड कॉन्टिन्यूस. ठीक है? बट सैलरी का क्या होगा? कैन सैलरी बी एनीथिंग? तुम अगर मेरे से पूछो तो मेरे को जो सैलरी आती, क्या वो वैसे तो फिक्स सैलरी आती, बट अगर कोई एग्जैक्ट नंबर पूछे तो आंसर होगा 0. बिकॉज जो तुम्हारा टैक्स होगा, पीएफ होगा, कुछ भी कट के हो सकता है वो डेसिमल्स में आ जाए. इट कैन बी एनीथिंग अगेन. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू आर डूइंग अ सर्वे on the income, or let me say you have a shop. एक छोटी सी दुकान है तुम्हारी. जितनी बड़ी दुकान लोगे उतनी ज्यादा रैंडमनेस आ जाएगी. लेट्स से छोटी सी दुकान है, उसमें सिर्फ 40 to 50 आइटम्स हैं डेली यूज के. ठीक है? ऑल दिस ब्रेड एंड चीज व्हाटएवर, एंड your daily sales is around 1000 rupees. So if I ask you what is the probability that your sales would be around 1000, then answer will not be 0. Then it would not be 0. But if I say exactly 1000, then answer would be 0. क्या तुम गारंटी कर सकते हो कि 1001 रुपये की सेल नहीं होगी, या 999 की सेल नहीं होगी, या 1000.50 पैसे की सेल नहीं होगी, या 1001 की सेल नहीं होगी, या 1002 की सेल नहीं होगी? So if you find out the combinations, the number of combinations may be infinite. Let's say someday a sale may be 900 also, someday a sale can be 1200 also, and then it can be anything between 900 to 1200. तुम्हें समझ इतना समझ में आ रहा है? There are infinite number of numbers between 900 to 1200.
Not only 900, 1200, but let's say number is 3 and number is 4. Between 3 and 4, there are infinite numbers. It can be 3.001 till anything. So when you say exactly, answer will become 0. So तुम्हारी इस छोटी सी दुकान में भी if you say exactly 1000 rupees की सेल करनी है, तो आंसर फिर हो जाएगा 0. समझ में आ रहा है आइडिया? दिमाग में थोड़ा दर्द हो रहा है क्या? है? नहीं? क्या हो रहा है? लोड बढ़ रहा है? बढ़ने दो, लोड ज्यादा बढ़ रहा है। वो सिद्धार्थ बोला बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी, लोड बढ़ेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब सही होने लगेगा। एक दिन आएगा तुम्हें आदत पड़ जाएगी। See, इसमें एक चीज तुम लोग को समझ में आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज विद टॉसिंग ऑफ योर कॉइन। टॉसिंग ऑफ योर कॉइन में देयर आर नॉट इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस, बट रेनफॉल में, इनकम में कॉम्बिनेशंस आर इनफाइनाइट, टोटल आउटकम्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, रिमेंबर दैट वर्ड, न्यूमेरिक एंड कंटीन्यूअस डेटा एंड डेटा इन कैटेगरीज। वैसे तो प्रोबेबिलिटीज के बहुत सारी चीजें डिस्कस करने का मन है मेरा, बट लेट्स कम बैक टू दिस सेम क्वेश्चन। I want this idea to sink in better. See guys, let's come to over here. So basically when I am asking exactly 200, the answer is 0. But if I say, इसको ऐसे समझो guys, जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, माइंड बॉडी सोल ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि क्यों 0, उसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मे बी इट इज अ इजियर वे और मे बी इट इज अ डिफिकल्ट वे, बट फिर भी समझने की कोशिश करो। सपोज let's say rainfall is normally distributed, for example, let's say rainfall is normal distributed, या कोई भी सा भी distribution ले लो। So let's say this was your distribution of rainfall, ठीक है, this was distribution of your rainfall. So you can say from any year, let's say you say from 2010 till let's say 2021 or whatever. Consider that this point was, let me say this point was 200 centimeter, ठीक है, this was 200 centimeter. Now what is this point 200, point number this 200, how many points would be there on this line? किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। So 200 is just a point. And what is the area of point? क्या point का कोई area होता है? Area of point is 0. So if you are talking in terms of probability, this entire region, let's say this entire region would be equal to 1, because probability cannot be more than 1. So all the possible outcomes की probability हो जाएगी 1. And within that, all those infinite number of combinations, you are choosing one combination, which is just a single point, and area of point is always 0. But, so अब सबको समझ में आया that when I say exactly, the answer would be 0. ठीक है, because exactly means it's just a single point on all the total number of combinations or the line. But if I say, what is the probability that it ranges between 200 to 205? Then answer is not 0.
Why? Because if this point is 200, then 205 is, let's say, over here, point number B. And now you can imagine the area. This is your area between the 2 points. And from the diagram itself, I can see that this area is not 0. It is a non-zero value. It means अब उसका answer 0 नहीं होगा. Now you can easily calculate that in how many years the rainfall was between 200 to 205. अब इसका आंसर एक फाइनाइट नंबर में आ जाएगा. So for example, between 200 and 205. So you can take this year, 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 and how many total years were there? I think 11 years here there. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 by 11 के आसपास आ जाएगा आंसर. When you talk about in a range. कोई भी, let's say तुमने एक एग्जाम दिया है out of 100 marks. If I ask you एग्जाम के बाद what is the probability that you will get exactly 70 marks, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा. बट अगर मैं पूछूं कि 70 से 80 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, then you can easily answer कि हाँ आ जाएगा, right? But if I ask you what is the probability of getting exactly 75 marks, then it would be very difficult for you. हो सकता है तुम्हारा 74 आ जाए, या 75 आ जाए, या 76 आ जाए, कुछ भी आ जाए. इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. एक बैट्समैन जाता है बैटिंग करने के लिए और तुम उससे पूछो एग्जैक्टली 45 रन बनाएगा, तो बोलना इट्स यू आर टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क. ठीक है. बट लेट्स से इफ यू से if a person scores anything between 40 to 50, I will still consider as 45. It means मेरा prediction right है. Then your probability would be very high. But if you say only exactly 45, then probably it's a very tough choice. ठीक है. Answer will again go to 0. Is it clear, this part? Let me recreate one more example for you. ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना है या टॉपिक चेंज करते हैं? चेंज मीन विद इन प्रोबेबिलिटी. Okay, let's take a totally different type of probability. अगर पहले दिमाग में दर्द हुआ था तो अब और होने वाला है. क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए. किस चीज से ब्रेक? ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले. पहले सॉल्व तो करो. On an average, 4 customers visit your store in an hour. What is the probability that 5 customers will visit in next 1 hour? Distribution is Poisson distribution. अब ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है if you don't know the formula. It is a standard formula. But there are certain distributions which are Poisson distribution. ब्रेक इसलिए नहीं दे रहा हूँ because आज तुम्हारा क्लास 11:30 तक ही रखता है. ठीक है. So after 11:30 you can have lunch, tea, whatever, breakfast.
Okay. So I don't want anyone to try this question because no one will give me the right answer because पहले questions में ही struggle हुआ है, तो ये वाला तो obviously तुम लोग नहीं कर पाओगे. And let me explain the concept also, and then probably I'll put the formula. Acha, now everyone stop and just let's focus. So on an average, 4 customers visit your store. Let's say you have a shop, store, or you are a dentist or whatever. Okay? Or you are working in some support. Some people are calling you. On an average, 4 customers visit your store in an hour. What is the probability 5 customers will visit in next 1 hour? Okay? Now, what does this line means, guys? इस लाइन का मतलब क्या कोई समझाएगा मुझे? This is basically the past data, can I say? So in your past, you have observed that on an average, so sometimes more than 4 may come, sometimes less than 4 also may come. But on an average, on long run, 4 customers are visiting your store in an hour. But 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 minutes. So I am saying they are visiting your store in an hour. It doesn't mean that after every 15 minutes, 1 customer is coming. ऐसा नहीं है. There may be a scenario that all 4 customers come together. The hour started and all 4 customers came, and then you are sitting idle for next 40-50 minutes. Yeah, ऐसा हो सकता है after every 15-20 minutes a customer is coming, or you are sitting at the starting ideal for starting of the hour and at the end customers are coming. कुछ भी हो सकता है. But on an average 4 customers आएंगे. Distribution is Poisson. ठीक है. So if ऐसा कोई अगर question आएगा, then you don't need to worry whether the distribution is Poisson or not. The person will tell you. He would have observed and he would have told you that distribution is Poisson. ठीक है. So for Poisson distribution, the formula is something like this: e power minus lambda upon lambda power, or let me say not e power minus lambda into lambda power x upon factorial x, where either you say, lambda is nothing but your mean. Okay, so what is the value of mean over here? In this example, mean is 4. And what is the x? X is the value in question. 5. Ab dal do. E power minus 4 into 4 power 5 upon factorial 5. निकालो please, कितना होगा ये? E power minus. So I am marking this formula to be remembered. इसको याद रखना सबको. ये याद रखो. इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला. 0 point. Others also please. E power minus lambda into lambda power x upon factorial. And if I change this question, if I say, what is the probability? What is the probability of at most 5 customers? तब क्या हो जाएगा? At most 5 customers. निकालो देखो क्या होगा. Just tell me the approach. At most 5 customers visit. ज्यादा से ज्यादा 5.
And this is the last question and then end session. So probably we'll try to increase your 1 hour on Saturday, Sunday. And for next 2-3 weeks, probably this thing will continue because I am heavily occupied in office. At most 5 customers. See guys, at most 5 customers का आंसर क्या हो जाएगा? At most means ज्यादा से ज्यादा 1 से क्यों माइनस करेंगे? No, you have to say 0 customers, 1 customer, 2, 3, 4 and 5. Value of lambda will always remain 4. Value of x will keep on changing. So what is the formula? Formula would be e power minus 4 or e power minus 4 into 4 power 0 upon factorial 0 plus e power minus 4 into 4 power 1 upon factorial 1 plus e power minus 4 into 4 square upon factorial 2 plus e power minus 4 into 4 cube upon factorial 3 plus e power minus 4 into 4 power 4 upon factorial 4 plus e power minus 5 into 4 power 5 upon factorial 5. Am I right? Yahi hoga? So the value of lambda will remain fixed. Value of x will keep on changing at most 5. Okay? So don't try to find the exact number. I'm not interested in the exact number in decimal, but concept wise, I want this idea to be clear in your brain. Okay, na? So normally your natural जो events होते हैं ना, your natural calamities, they follow the Poisson distribution. एक volcano का erupt होना, that would be a Poisson distribution. Earthquake का आना, that would be a Poisson distribution. So let's say in last 100 years, there was 2 times earthquake came. So इसका मतलब ये नहीं कि next 50 years में वापस आ जाएगा. उसका distribution Poisson है. तो हो सकता है for next 90 years no earthquake comes. But बाकी बचे हुए 10 साल में हो सकता है 2 बार आ जाए. समझ रहे हो? तो वैसा. So natural calamities are normally Poisson distribution. They follow Poisson distribution. So there is one more important topic in probability which I am yet to discuss. But अभी मुझे को ऐसा लग रहा है कि लोगों का mind overfill हो गया. That is your conditional probability. ठीक है? But I have taken the name of conditional probability. Let's discuss a bit. So I am not going to cover this today. Just एक बता रहा हूँ so that those who are interested can go home and study. So conditional probability is something like PA by B is equal to P A intersection B upon PB. Or you can say P B by A into PA by PB. क्या होती? Can someone take an example of conditional probability? हम लोग फ्राइडे को वापस डिस्कस करेंगे बट फिर भी एक बार. Okay, if I say let's say there is a match between India and Australia.
कभी तो होगा ही, आज नहीं है। लेट्स से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच होने वाला है। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग? इज इट एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नो, व्हाई नो? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन भी तुम्हारा ठीक नहीं है, रादर किसी का भी ठीक नहीं है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग गिवन इंडिया हैज वन द टॉस? अब बताओ, is it a question of conditional probability? Now this is a question of conditional probability. Can you notice that there are two events? दो चीजें होती हुई दिखती हैं. One is probability of India winning. Probability India winning is one event, and India has won the toss, that is another event. ठीक है? What is the probability that it will rain? It is not conditional probability. Probability that it will rain given that there are dark clouds. काले बादल आ गए, अब बारिश की प्रोबेबिलिटी क्या? Right? So that is something your PA by B. Probability of occurring. So PA by B implies probability of occurrence of event A when B has already occurred. अगर ये वाला एग्जांपल है, if I take this example, then what would be the event A? And what would be the event B? इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले में winning the toss would be B, because ये इवेंट हो चुका है, टॉस हो चुका है, अब मैच स्टार्ट होने वाला है. So India has already won the toss. Now what is the probability that you win the match? A. ठीक है? So if you get time, guys, explore the conditional probability. Anyway, on Friday when we'll meet, we'll start it afresh. ठीक है? Then we'll put the numbers. We'll take few more examples. Okay. And whatever questions we have discussed, highly recommended that you at least see those examples or do a Google search or wherever and see some more questions surrounding it. Okay? Because probability is a very big concept and everything cannot be discussed in class. So try seeing it. Can rolling of dice is a conditional? Take an example. So whether it is conditional or not, it will depend what your statement is. Okay? So rolling of dice can be a conditional or it may not be a conditional. But upfront it seems it is not a conditional. So rolling of dice can be conditional in this way. So if your statement is something like this, dice was rolled and we got 4. What is the probability of getting 7 or of getting some as 7? अगर कुछ ऐसा है then probably it may be a conditional probability, but अभी भी ये conditional probability question नहीं होगा because answer इसका fix आ जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है? So upfront it would not be a question of conditional probability. Hey guys, so with this I'll end the session. Thank you for joining and we'll meet on Friday. अब तुम लोग आराम से अपना lunch